All right, so let's see. 4 days of consistency non-stop is a very rare sight. And then we see people studying 18 to 19 hours a day and getting a 745 and getting any business school they want. Very average. They say they were so average, but some people are able to do this, some people are not able to do this. So clearly this has been a big challenge. Everybody says that this is a big challenge. I mean, and I'm not denouncing you, I'm not saying कि ये गलत है. I'm not at all saying that no, why can't you be consistent? If you can't be, then there should be a solution from my side rather than crib about it. So this has been there. This is what my answer to that is. The batch that we have, and I'll talk about the batch first. So some people genuinely need this kind of clarity. This batch is not a forced batch ki sabko join karna chahiye. It is not something like that. I never do that. No invitation from my side, just to solve a problem that you're facing. If this is your problem, then this is a solution. The reason for that is, आप ये सोच के देखो कि 40 lakh is, or 45 lakhs if you look at GST etc, around that is what we pay to ISB if you don't get scholarship, and not everybody does. Think about a loan after that. Sorry, just a sec. Think about a loan. And the repayment of that loan will be somewhere about 50 to 60 lakhs, depending on in how much time you pay it back. All this can be saved if you have either 30 more marks or probably 150 more marks, depending on what you are scoring right now. Somebody might be at 685, easily able to get to ISB or any business school that person wants to, but no scholarship below 715 is the reality we've seen. Somebody might be at, let's say 535, and that person genuinely wants to get to 750. So it could be 30 more or 150 more, but this can happen. First of all, it has happened for very average people. Number one. Number two, if it can happen, and it can happen in 1 month for some people, why is it that we can't devote that kind of month to our prep and really see that, no, why should I waste 1 year? Basic logic is this. And again, confidence and motivation, मैं क्या बोलूं इस चीज के लिए कि हाँ पहले मेरा कैट खराब हो गया, मैंने जीआरई दिया, वो नहीं हो पाया, ये I have fear of exam anxiety. मैं आपके माइंड पे तो इतने कम टाइम में काम कर ही नहीं सकता. माइंड तो क्लियर करके लाना पड़ेगा. अगर आपको बी स्कूल जाना, यू वॉन्ट सर्वाइव अ डे एट आईएसबी, फॉरगेट हार्वर्ड वगैरह तो भूल ही जाओ. आप किसी तरीके से कर भी लोगे. अगर यही प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज सो रिगरस. 5 बजे सुबह उठते हैं लोग, या 5 बजे तक सोते ही नहीं है, और रात को 11-12 बजे तक चलता रहता है बी स्कूल नॉन स्टॉप. एंड इट इज सो हाइपर कंपेटिटिव. आप अगर बी स्कूल जा रहे हो तो ये सोच के जाना कि हर किसी ने जीमैट दिया होगा और क्लियर किया होगा, हर किसी ने एसेस लिखे होंगे, हर किसी ने इंटरव्यू क्लियर किया होगा, हर किसी की प्रोफाइल जॉब सब रहा ही होगा. That means people who are going are absolute achievers. किसी भी स्कूल में, even ISB, I'm not saying ISB is like so gung-ho about profile, but still, I mean, decently intelligent people go there and they want to do their best. कोई 1 साल अपनी जॉब छोड़ के जा रहा है और कोई 40-50 लाख रुपए दे रहा है, तो वो सीरियस तो होगा कि मैं इस 1 साल का जूस निकाल लूं पूरा. हमारी गलती बता रहा हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग द मिस्टेक दैट वी. हमें ना लास्ट स्टेज तक जाने के पहले 10 चीजों में प्रॉब्लम है कि हाँ थोड़ा पढ़ लिया, फिर ब्रेक आ गया, फिर वापस से 1 महीने तक तो ऑब्वियसली यू कांट पिक योरसेल्फ अप. इफ यू हैव अ ब्रेक, फॉरगेट इट. जीमैट यू कांट पिक अप द नेक्स्ट वीकेंड. ओके, यू जस्ट कांट. दिस इज नॉट एन एग्जाम. यू पिक योरसेल्फ अप अगेन. फिर बहुत सीरियस हो गए, 1 महीना बहुत पढ़ाई किया, फिर कुछ ब्रेक आ गया, एंड वी रीच समवेयर अबाउट 60%. इसके बाद जो गैप होता है कि हाँ 90+%, वो कुछ लोग क्रैक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते. दे जस्ट डोंट क्रैक दिस and they just give up कि इससे ज्यादा हो ही नहीं रहा, प्लेटो आ गया preparation. There has to be a reason for that also. How to break that plateau in preparation? There has to be a way out, because people from Hindi medium, Punjabi medium, people who spoke only Telugu as their own language, they couldn't speak any word in English. They have scored 100% in verbal. That means what? ये difference है. आपकी English उनसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं, क्योंकि माइंड में एक लॉक हो जाता है कि इससे ज्यादा मेरा नहीं आ रहा. बिकॉज you have 60% accuracy today, tomorrow you want to see 70%. Some things just don't happen like that. They take a lot of time. थोड़ा सा यहाँ पे एक बैरियर आता ही आता है, हम यहाँ पे क्विट कर देते. फिर से अपने आप को पिकअप करना is the most difficult task. The most difficult task is picking yourself up again when you quit.
इट्स बेटर, दैट्स व्हाई वी से कंसिस्टेंसी। एंड हर टॉपर का इंटरव्यू देख लो जिसका स्कोर आया है, एक भी अगर ऐसा स्टूडेंट हो कि नहीं इसने कंसिस्टेंसी वर्ड यूज नहीं किया अपने, वी डोंट टेल देम कि पहले से बता के रखा कि कंसिस्टेंसी जरूर बोल देना। That's not how we talk at all. Obviously, they share their own journey there. And you will agree that your biggest problem can be that only. And please remember, थोड़े दिनों का plateau जरूर आता है. If you've heard me before, you heard all these things before, all of these. I've discussed this in Know the World. I've discussed this all the time. Some plateaus cannot be broken through the next day itself. We have an expectation, if I don't improve so soon, I'll quit. तो जिसको डरना है वो डरता है, जिसको नहीं डरना है वो नहीं डरता है। आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थ्रू माय कलीग. He was doing a podcast with one of the toppers called Yash Singh, who in 21 days got into Kellogg. Just 21 days of GMAT. 21 days, not kidding. उससे पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा यूएस जाने से? बोला नहीं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी कॉम्पिटेंस पे भी भरोसा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है. आई एम गोइंग, नो दीज न्यूज थिंग्स आर टोटली रॉन्ग, बट वही चीज है, दीज थिंग्स अफेक्ट अस अ लॉट. Again, verbal and DI long sittings is a major focus here, major focus, because ये सारे areas हैं, we know how to break through these, okay, we know, but कई बार push चाहिए. So you are saying I'm stuck at 40, 50, 60% and I'm not able to break through because you did not take the effort to really go that extra mile. आपने 60% के बाद persist नहीं किया, because you want 90% the next day. That will not happen. There will be a plateau of a few days, sometimes a few weeks. We have to push through at that time.